स्वागत दोस्तों तो क्रिकेट एडिक्टर स्पेशल प्री मैच लाइव शो फॉर आईपीएल 15 मेरे साथ जुड़े हुए हैं अशोक मल्होत्रा सर द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन एंड अ फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर वेलकम अगेन अशोक सर Thank you very much, Eddie. Thank you. तो दोस्तों थिंग्स आर हीटिंग अप वी आर गेटिंग टू द बिजनेस एंड ऑफ द आईपीएल आज होगा मैच 64 पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में और दिस इज द लास्ट वीक ऑफ द ग्रुप स्टेज मैचेस दोनों टीम अब 12 पॉइंट पे है मैच होने वाला है डॉक्टर डी वाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई से तो अशोक सर पहले बिग पिक्चर पे बात करें दे बोथ आर आइडेंटिकल दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स फिफ्थ और सेवंथ प्लेस पे पर नेट रन रेट से दिल्ली कैपिटल्स थोड़ी ऊपर है तो सर दे बोथ कैन रीच 16 पॉइंट्स तो सर प्लेऑफ के रेस में पंजाब और दिल्ली के बीच में आपको कौन सी टीम लग रही है कि बेटर चांस है देखिए जिस तरह पंजाब पिछला मैच खेली आई थिंक दे सीम टू बी गुड साइड ऑल्दो दे पंजाब किंग्स के ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी है शिखर एंड जॉनी बेयरस्टो जिस तरह बेयरस्टो ने फायर करना शुरू किया लिविंगस्टन फायर कर रहे हैं क्योंकि ऐसी बल्लेबाजी है कि अगर चल निकलती है तो फिर किसी पे भारी पड़ती है क्योंकि लिविंगस्टन जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं बेयरस्टो शिखर राजपाक्सा तो आपके पास अच्छी खासी बल्ले जितेश शर्मा तो बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी है फिर नॉट टू फॉरगेट ऋषि धवन हु कैन व्हील द विलो आल्सो तो मिलजुल कर अच्छी सॉलिड बल्लेबाजी दिखाई देती है गेंदबाजी में मेरे को ऐसा लगता है कि एक स्पिनर की कमी है उनके पास और राहुल चहर को छोड़ के दूसरा कोई ऐसा स्पिनर नहीं हालांकि लिविंगस्टन अपना काम जरूर करते हैं पर ही इज नॉट अ फ्रंट लाइन स्पिनर सो दैट इज द ओनली डिफरेंस बट अदरवाइज ऑन पेपर लुक्स टू बी पंजाब किंग्स बट दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं दिल्ली कैपिटल्स उनके लिए ओपनर्स की परेशानी है डेविड वार्नर के साथ कोई दूसरा ओपनर नहीं है आई थिंक हाई टाइम दे शुड ट्राई यश टूल who can be under 19 India captain champion player did very well in domestic cricket they can try him and then not to forget they have got Mitchell Marsh they've got other good striker Powell is there so definitely very good Shreyas Iyer is there so they have a good team altogether but the fact is they have to be they're missing Prithvi Shaw surely so we'll have to wait and watch but I think they're depending too much on Warner and maybe Mitchell Marsh and to Rishabh Pant he's playing small camp he's not showing the full picture और सर जस्ट टॉकिंग ऑन दिल्लीज ओपनिंग पार्टनरशिप सर डेविड वार्नर ने पहले 2 मैचेस मिस किए हैं पर अभी तीसरे नंबर पे ऑरेंज कैप पे विद 427 रन सबसे ज्यादा 50s भी लगे हैं इस टूर्नामेंट में तो सर इन पे कितना डिपेंड कर रहा है डीसी की ओपनिंग गिवन दैट पृथ्वी शॉ लास्ट 2 लीग मैचेस मिस करेंगे देखिए डेविड वार्नर इज अ मैच विनर जिस भी टीम के लिए खेलते हैं अगर आप देखिए जिस तरह केएल राहुल इज बीन स्कोरिंग रन्स बाय टन्स इन लास्ट 3-4 IPL वैसा ही David Warner except for the last year when there was a misunderstanding between him and the franchise otherwise he has been a match winner always been a match winner and he wants to win somewhere he wants to show Sunrisers Hyderabad ke you missed me you will be missing me so I think he has a point to prove उन्होंने उनके ये रन बनाए थे वो अलग बात है लेकिन he wants to prove by winning the tournament and nothing less than leading for front और क्या लग रहा है सर केएस भारत को दोबारा एक चांस मिलेगा या जैसे आपने बोला यश टोल या किसी और ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकती है दिल्ली कैपिटल्स देखिए केएस भारत हैज प्लेड अनलाइक केएस he is trying to hit the ball from ball one maybe it is his role the role has been given to him because he is normally a guy who takes his time and settles down and then plays big shots but maybe because Mitchell Marsh next to come Powell is there Rishabh Pant is there so maybe he has to go after the bowling and not to put pressure on David Warner. But I think it's at high time you try Yash Tull, who has been a good player. He's a good youngster, promising youngster. It might not be a bad idea. So I don't know whether they'll make a change or not. But I don't see Bharat playing today. और सर पंजाब किंग्स की ओपनिंग पार्टनरशिप जॉनी बेयरस्टो अब कम से लगातार हाफ सेंचुरी और शिखर धवन तो सर ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन कैसे लग रहा है आपको Wonderful, because Bairstow हम सब जानते हैं सनराइजर हैदराबाद के लिए how well he played, and he is a destroyer. कहते हैं ना इतना विस्फोटक बल्लेबाज है कि दूसरे को कुछ करने की जरूरत नहीं होती. अगर उनका बल्ला बोलना शुरू हो गया तो फिर बहुत मुश्किल नहीं होगी पंजाब किंग्स को जिस तरह पिछले मैच में हुआ जिस तरह
आते उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, the life was very easy for rest of the batters. But Shikhar still will have to play the role of a sheet anchor. पिछले मैच में आउट हो गए, लेकिन लिविंगस्टन played a blinder. But otherwise you still need Shikhar Dhawan. तो मेरे को ऐसा लगता है कि शिखर धवन का रोल होना चाहिए कि मैं 20 ओवर खेलने की कोशिश करूंगा, and then around me everybody, be it Bairstow, be it Livingston, and others will or Rajpaksa, and others will revolve around. Jitesh Sharma can revolve around. So I think Shikhar is the main guy in this team. और सर हम दिल्ली कैपिटल्स के मध्यक्रम पे बात करें तो मिचेल मार्श ने लास्ट गेम में बहुत अच्छी तरह प्रूव किया, पावल ने भी कुछ अच्छी पारियां खेली हैं सर, पर ऋषभ पंत का अभी तक इस आईपीएल में एक 50 नहीं हुआ है, तो क्या लग रहा है सर, एक लंबी पारी की उम्मीद है आपको? देखिए, अगर अब नहीं करेंगे तो कहते हैं ना देरी हो जाएगी, तो अगर अब करते हैं तो आप कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत हाई टाइम ही शुड कम टू द पार्टी, बिकॉज यू आर ओनली कैप्टन, यू आर नॉट स्कोरिंग रन। अगर आप छोटे छोटे कैमियो खेल रहे हो, उससे कोई लाभ नहीं होता दिल्ली कैपिटल। मैचेस अभी तक किसने जितवाए हैं? वार्नर ने, मिचेल मार्श ने या पावल ने। तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत, हु इज अ मैच विनर, वी ऑल नो, अ प्रूवन मैच विनर, he has not been able to score runs. So time for him to come good and try to lead from front. और सर बात करें राजपक्सा, लिविंगस्टोन, जितेश एंड नॉट टू फॉरगेट द स्किपर मयंक अग्रवाल, तो कैसी लग रही है सर ये धमाकेदार मध्यक्रम, जिसमें आउट ऑफ विच सर टू ऑफ देम हैव वन ऑफ द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट्स दिस टूर्नामेंट, लिविंगस्टोन एंड जितेश? A phenomenal batting lineup. But I still say, Adi, Shikhar will have to bat. क्योंकि इतने धमाकेदार बल्लेबाज हैं, they are explosive batters. Beat Bairstow, beat Mayank Agarwal, beat Livingston, beat Rajpaksa or Jitesh Sharma. They all are explosive. But if they are 10 for 2, then they don't know how to rebuild. That is the main problem. That is why I keep saying Shikhar has to bat 20 overs. I know last match it was a different ball game because Bairstow started firing from word go, and then Livingston took the game away. But it does not happen every day. So if you are 10 for 2 in the power play, then how to recover? That is where Shikhar comes in handy, because others are all strikers. They don't know how to build a side, how to build a total. So that is sometimes become very, very important, especially in the knockout games. और सर क्या ऋषि धवन का एक इस पंजाब स्क्वाड में होना साइड को और बैलेंस बनाया है? Definitely, the way he's bowling, he's not brisk, but he is a good mover, and he's a very experienced player. And not to forget, he can hit some big shots in the later stages, like he showed in a game. He can hit big. So he's a plus player. He's a guy who knows how to express himself in a bigger game. He's a big match player. So I think he's a plus for them. I think should have played him to word go, because but maybe his age or maybe his pace probably did not allow. But I think कहते हैं ना, देर से आए पर दुरुस्त आए। और सर हम ओवरऑल पंजाब किंग्स की स्क्वाड की बात करें तो हमने देखा लास्ट मैच के संदीप शर्मा को बैठा के हरप्रीत ब्रार वाज गिवन अ चांस और एक और स्पिन ऑप्शन भी मिला था, तो क्या लग रहा है सर, हरप्रीत ब्रार के साथ कंटिन्यू करेंगे या संदीप शर्मा की वापसी देख सकते हैं हम टीम में? देखिए, ऐसा है कि आई थिंक आई वुड प्ले संदीप शर्मा, बिकॉज उनका स्लो स्विंग कराते हैं, इन स्विंग कराते हैं, और फिर कहीं ना कहीं उनकी जो स्विंग है बॉल गति से नहीं आती, और उनके पास वार्नर, मिचेल मार्श, पावल, वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको गति चाहिए, ऋषभ पंत, सबको गति वाले गेंद चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर संदीप शर्मा से शुरू में आप गेंदबाजी कराएं तो 2-3 विकेट नहीं तो कम से कम रनों पर अंकुश जरूर लगा पाएंगे, और उनका जिस तरह जितने भी मैचेस खेले उन्होंने काफी प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से। अब जबकि हरप्रीत बरार, मेरे को ऐसा लगता है कि बल्ले पर बेहतर आने की संभावना, खासकर डेविड वार्नर। और सर ओवरऑल आपको दिल्ली की बॉलिंग यूनिट आप कैसे असेस करते हो सर, और क्या कुलदीप और अक्षर जो उनके लीड स्पिनर्स है दोबारा विकेट्स के अमंग हो सकते हैं? जी, होना ही होगा। कुलदीप यादव, मैं जानता हूं कि he can go for very many, but he can pick up wickets also. And Akshar Patel keeps the end quiet, although last match he also went for very many. But the fact is, somewhere along the line, they are a very formidable team, Kuldeep Yadav and Akshar Patel, because those 8 overs are going to be very, very vital. और सर जिस तरह की लय जॉनी बेयरस्टो में दिख रहे हैं और लास्ट गेम पेस की बहुत पिटाई किए थे उन्हें, तो क्या अक्सर को दिल्ली या किसी और स्पिनर को पावर प्ले में यूज कर सकती है दिल्ली कैपिटल्स?
आई थिंक करना ही होगा क्योंकि तेज गेंदबाज नोकिया इज अनदर वन हु कैन बी effective in the power play because he's brisk, he's quick. So I think it might be a good thing. And so I think it might not be bad idea to start with Akshar Patel and Nokia from each end. और सर नाउ टॉकिंग ऑन पंजाब्स बॉलिंग यूनिट ओवरऑल काफी अच्छा शो किया था उन्होंने लास्ट टाइम रिस्ट्रिक्टिंग आरसीबी फॉर 155 और रबाडा सर जो दिल्ली के एक्स पेसर अब लास्ट मैच बहुत अच्छी प्रदर्शन किया था 3 विकेट्स तो आज क्या लग रहा है सर देखिए रबाडा इज is very effective bowler, especially in the slog overs. Slog overs, I know he goes for very many, but he picks up wickets. That slows down the opposition. And then not to forget Arshdeep Singh. Rabada is a top class bowler, world class bowler. He can bowl well in the power play and then bowl well in the slog. So he's a plus bowler for them. And not to forget Arshdeep Singh is very, very effective. And if they play Sandeep Sharma, he can be useful. And Rishi Dhawan can never underestimate Rishi Dhawan because वो जितनी डिपली डॉपली bowling करके he checks the flow of runs. And not to forget, then you have got Rahul Chahar and Livingston can chip in with a couple of overs. So they have a formidable batting bowling led by Rabada. और सर फाइनली कमिंग टू की प्लेयर्स क्या लग रहा है सर एक दो की प्लेयर दिल्ली और पंजाब से देखिए जहां तक पंजाब का सवाल है आई माइट गो फॉर जॉनी बेस्टो वंस अगेन फॉर मी जॉनी बेस्टो एंड I will go with Arshdeep Singh. The way he has been bowling, Arshdeep has been a pick of the bowler. And when you talk about Delhi Capitals, definitely David Warner. He is my favorite anyway. David Warner and I think I'll go with somebody like Mitchell Marsh. The way he's batting, Mitchell Marsh is another phenomenal player. और फाइनली सर दोनों टीम्स की ये थोड़ी कमिंग शॉर्ट कमिंग हुई इस साल दैट दे आरंट एबल टू स्ट्रिंग कंसेक्यूटिव विंग्स पर अब तो एकदम बिजनेस एंड है तो क्या लग रहा है सर दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स देखिए अगर जो रिकॉर्ड है उस हिसाब से तो दिल्ली कैपिटल्स को हारना चाहिए क्योंकि वो एक मैच जीतते एक हारते एक जीतते एक हारते लास्ट मैच उन्होंने जीता था तो उस हिसाब से हारना चाहिए बट आई थिंक आई वुड गो विद पंजाब किंग्स द वे दे प्लेड द लास्ट गेम बट प्रोवाइडेड they have a good start because Bairstow and Shikhar Dhawan ki partnership is very vital but I will say 51-49 in favor of Punjab Kings. और सर डीवाई पाटिल में गेम है लास्ट गेम भी हमने देखा दैट दिल्ली वाज सक्सेसफुल इन चेजिंग तो आज क्या लग रहा है सर बैटिंग टीम या चेजिंग टीम हु विल हैव द एज I think both of them will probably chase, but I would say Punjab Kings is a better side batting first, whereas Delhi Capitals is a better side batting second because they have the depth in the batting, and then not to forget they got David Warner who can control the innings. Yes, definitely, sir. And with that, guys, we're wrapping up match preview for match number 64. Many thanks, Ashok, sir, for joining us and the wonderful Thank insights. And we will see you guys tomorrow. Thank you very much.